Assalamu everyone, welcome to the first episode of Rubaru. Let's talk. So today we have with us Zainab Nakri. She is a holistic health coach and yoga instructor based in Dubai with over 5 years of experience working in mental health and life coaching. So Zainab, thank you for coming with us today. And हम आज मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, what it entails and everything associated with mental health. So Zainab, mental health क्या होती है? Thank you so much, Mahanur. Thank you. I think it's the most important topic these days to discuss क्योंकि जितने भी मेरी सराउंडिंग में लोग हैं, whether it's in Dubai, whether it's in Pakistan, कहीं भी, I think mental health is something जो कि बहुत surprisingly अब early age से शुरू हो गई है. Like you see people as young as 11 years old, 12 years old, जिनको depression हो रहा है, जिनको anxiety attacks हो रहे हैं. So I think it's crucial to discuss it openly और मेरा ख्याल है, and I hope कि it's no more a taboo in Pakistan इस बारे में बात करना. It is still there, I know, लेकिन the more we talk about it, it's extremely important. So basically, mental health, I want to tell you one thing which is very important for everyone to know कि mental health actually में ये है कि जब आप अपना stress को manage कर सके कोई भी individual easily अपने behavior को manage कर सके अपनी abilities का उसको पता हो and they can process information easily and they can work productively. That means you have a healthy mind. आपकी mental well-being जो है वो एक अच्छी condition में है. So, why this topic is so much important to me? It's because this is me in 2013. और मैं खुद इसका, I was a victim of depression and attention deficit disorder. This was also mental illness. Like मैं किसी चीज पे focus नहीं कर पाती थी. ऐसा नहीं था कि मुझे interest नहीं था. I really want to listen to my teachers and all that, but I just couldn't. मेरा focus ही नहीं था. And it's maybe because of interrelated कि मुझे hypothyroid भी था. और of course depression उसकी वजह से interrelated है क्योंकि it's one of the symptom of hypothyroid और ADD भी और chronic stress छोटी छोटी बातों पे anxiety और बहुत frequent में जगह जगह बेहोश हो जाया करती थी और low blood pressure weight gain इतना ज्यादा हो जाना और no matter what I do like 6 months में 1 kg and 2 kg so it caused a lot of frustration. But ये सब कुछ था 2013 में till I decided कि I have to fix all these issues. And the moment जब मैंने अपनी mental health के ऊपर काम करना शुरू किया, automatically the physical aspects of it वो भी ठीक होना शुरू हो गए. And 6 years, I actually started working on it in 2015. और अब 6 साल बाद, it's completely gone. This is like me in 2021. I have touch wood no chronic stress, कोई depression नहीं है इन पूरे 6 साल हो गए उसके बगैर. There's no anxiety, no ADD, hypothyroid भी मैंने reverse किया. So I just want to share my experience के how it all happened. And before I proceed and before you ask बाकी सवाल, I want to tell you कि mental health and emotional health जो है वो आपस में interrelated है. And this is very important thing to know. क्योंकि mental health is कि आप कोई भी information जो आपके brain को मिलती है आप उसको process कैसे करते हो. That is your mental health. बट उसमें इमोशनल हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है क्योंकि अगर आपकी इमोशंस आपस में इंटैक्ट नहीं है हाउ यू एक्सप्रेस एंड हाउ यू प्रोसेस फीलिंग्स जो कि उस इंफॉर्मेशन जो आपको मिली है उसकी बेस के ऊपर आप उस फीलिंग्स को कैसे प्रोसेस करते हो दैट्स योर इमोशनल हेल्थ. सो दे आर एक्चुअली इंटर रिलेटेड और डिफरेंस उनमें यही है कि mental health is more of your thinking brain, how you think, and emotional health is more of how you express, your sensitivity, how you feel things. आपकी cognitive mind, आपकी जो disorders हैं, disabilities हैं, आपकी it's more connected with the medical assistance, आपकी social competencies जो mental health है. Emotional में आप किस तरह affect होते हो छोटी छोटी चीजों से और it is more closely linked with your positive psychology or it is less connected with the intense medical assistance because mental health में of course you need medical help as well. Emotional में आपको counseling की जरूरत भी है, आपको psychological therapy की जरूरत भी है, and it can be easily managed by various जैसे कहते हैं आप habits अगर change करो, lifestyle changes करो तो आप अपनी emotional health के ऊपर भी काम कर सकते हो.
सो आई पर्सनली फील कि इन दोनों पे आपको इक्वली काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज लिटिल बिट मोर एडवांस, जिसमें आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, लेकिन अगर हम इमोशनल हेल्थ पे काम करना शुरू कर दें तो आई फील कि ज्यादातर लोग जो है वो मेंटल हेल्थ जो है उसको अपनी इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा कर सकते हैं। एंड दिस इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में मेंटल हेल्थ की, इज बेसिकली अगर आप इमोशनली और मेंटली स्टेबल हो, आप अपना बिहेवियर, अपनी फीलिंग्स को इजीली मैनेज कर सकते हो। यू कैन हेल्प योर सेल्फ इन अचीविंग योर फुल पोटेंशियल, क्योंकि आई नो कि ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है कि यू नो कि यू आर केपेबल ऑफ दिस, यू आर केपेबल ऑफ समथिंग रियली बिग, लेकिन आप उस पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पाते हो बिकॉज देयर इज अ हर्डल ऑफ योर मेंटल इश्यूज और योर इमोशनल इश्यूज आर कमिंग इन बिटवीन। आपका रिस्पॉन्सिव बिहेवियर के बजाय रिएक्टिव बिहेवियर होता है। यू आर मोर टेन टू कि आपने रिएक्ट करना है, वेदर इट्स एंगर, इट्स एग्रेशन, कुछ भी है आप रिएक्ट करते हो। रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इज मोर ऑफ विच कम्स फ्रॉम योर थिंकिंग ब्रेन, कि जो मैं कर रही हूँ, इज इट कमिंग फ्रॉम अ रिएक्शन और इज इट बिकॉज नो आई नो what I'm responding. Then you develop deeper connection with yourself and others around you अगर आप emotionally and mentally stable हो। Also जब आपका जो नेगेटिव बिहेवियर है आप उसको एक बहुत डिफरेंट लाइट में देखते हो, and you know yourself better, you know exactly why you are doing certain things, so that अगर आप ये सब चीजें easily कर रहे हो, that means you are mentally healthy person. Right. Yeah. So Sorry, yeah, you have a question? yeah, so you mentioned all these mental health illnesses and depression, ADHD, and Yeah. stress, ये सारी जो चीजें आपने mention की, what do you think are the causes for all these mental illnesses? Exactly, मैं भी causes के ऊपर आती हूँ यहाँ पर so yeah, अगले स्लाइड में मैं causes ही बताऊंगी। सिर्फ एक this is ये visual बहुत जरूरी था दिखाना, so that most people जी like they don't understand कि what is going on, क्योंकि हम अपने अंदर देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। This is a visual picture कि जब आपके ब्रेन बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है, तो ये जो आपकी ब्रेन की आप स्मूथनेस देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे, दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर ब्रेन लुक्स लाइक व्हेन इट्स इमोशनली यू आर मेंटली स्टेबल। पर जब आपका क्रॉनिक, आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो या आपके ब्रेन में या कुछ भी कोई ट्रबल चल रहा है, आप सही तरह सोच नहीं पा रहे हो, ये क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और ये ऑफ कोर्स बहुत ये इनिशियल स्टेजेस में नहीं, इट्स लाइक अ क्रॉनिक, लाइक आफ्टर 4 5 6 7 years of constant stress and constant anxiety, depression, this is what happens to your brain. एक unhealthy brain जो है, of course you are sad, you're sick, you take poor decisions as compared to a healthy brain. So now the thing is कि होता क्यों है? One thing is trauma, which most of us don't realize. We apparently think कि हमारा बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा है. We usually just think like that कि नहीं सब कुछ अच्छा था, our parents love us and there's no denial in that. Like सारे माँ बाप बड़ा अच्छे तरीके से we have been raised. Still there are some issues, within the family, within ourselves. क्योंकि what we don't realize कि trauma sometimes, if despite अगर आपका एक बहुत अच्छा बचपन भी गुजरा है और कोई problem नहीं है, trauma can be inherited up to 4 generations. Maybe your great grandparents, your grandparents had a trauma, और आपने वो inherit किया है through DNA. It's still there. It's still there, which we can't see, and that anger issues are there. और अगर आप सोचते हो कि यार हाँ, my parents were actually उनको तो कोई anger issues नहीं है, why I am like that? Because there are few things which we have inherited, and especially in our culture, I think हमारे grandparents ने बहुत trauma देखा है, especially during partition times, what they have been through, or एक survival mode, and they have been through a lot of trauma, especially women. I think हमारी अगर आप देखो उस जमाने की जो औरतें हैं, what they have been through, it's quite traumatic. तो I feel कि ये जो एकदम से if you see today's women, we have a lot of anger, and it doesn't come कि बस ऐसे ही हमें गुस्सा आ गया, हमें शौक है। I think it is inherited somehow, because आपने इतने अरसे की पेट्रियार्की देखी है, आपने बहुत कुछ सफर किया है, और वो सब कुछ it's stored in your body, it's stored in your cells, it's stored in your emotions, which need to work on. So हमें कैसे पता लगेगा कि हम इमोशनली या मेंटली स्ट्रेस्ड है, या हमें कोई इश्यूज हैं? सबसे कॉमन सिम्टम्स है आपकी स्लीप। आपको अब व्हाट आई हैव सीन जनरली सराउंडिंग में कि इंसोम्निया इज वेरी कॉमन। लोग रात को सो नहीं पाते हैं। उसके बाद आपका फिटीग,
despite having 3-4 shots of coffee and whatever they're doing, they're still stressed out, their still body is tired all the time. Low self-esteem, self-blaming, whatever is happening wrong आपके surrounding में, चाहे वो work place है, चाहे वो आपका personal relationship है, you tend to blame yourself कि मेरे अंदर कोई issue है, maybe I'm not doing something right. Indecisiveness, आप decision नहीं ले पाते हो. Hopelessness, you feel that there is no future, there's nothing good happening in my life. Feeling of guilt, shame, increase in less appetite या फिर increase in appetite. Mood swings, getting frustrated, getting angry. This is something very normally जो आप लोग face करते हैं. Now coming to जो आपने सवाल पूछा था कि causes क्या है, क्यों हमारे सराउंडिंग में इतनी डिस्टर्बेंस है मेंटली और इमोशनली. इट कैन बी शॉक. It can be shock in a sense that any news, any incident happen in your life, maybe not now, maybe it happened early in your childhood. Because अगर आप scientific evidences देखें और studies देखें, mostly क्या होता है, जो first 7 years जो होते हैं वो आपके crucial होता है. Why it's crucial? Because after 7 years हमारी जो in very layman's term, जो आपकी subconscious और conscious mind के दरमियान हमारे यहाँ भी filter develop हो जाता है 7 years के बाद. जो हम इतनी unnecessary information हर वक्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जब हम सोते हैं तो वो filter हो जाती है, because our brain doesn't need it, so उसको filter करके बाहर फेंक देता है, because we don't need it through our dreams and what. But first 7 years में वो filter नहीं होता. So बच्चा जो भी कुछ देख रहा है, सुन रहा है, चाहे वो टीवी के ऊपर है, वो फिल्टर नहीं होता, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है. सो मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी अ शॉक. आप बच्चे ने कुछ टीवी के ऊपर देखा है या आपने कुछ सुना है अपने पेरेंट्स के मुंह से, जो बच्चे के लिए अपेरेंटली वो फिजिकली उसको शॉक नहीं लगा, बट उसके इमोशनल ब्रेन को एक शॉक लगा. इट हैज बीन स्टोर्ड इन हिज सबकॉन्शियस माइंड. जो जब आप बड़े होते हो तो फिर कोई भी चीज आपको जब ट्रिगर करती है तो वो इंफॉर्मेशन सामने आती है. अगेन हमें ये चीजें पता नहीं लगती अनलेस वी बिकम कॉन्शियस ऑफ इट कि व्हाट इज इट. यू रियली नीड टू वर्क ऑन इट, और आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड. देन देयर इज डिफिकल्टी इन एक्सेप्टिंग. बहुत लोगों को एक्सेप्टेंस, लाइक दे हैव अ डिफिकल्टी कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दैट्स आल्सो वन ऑफ द आई थिंक बिगेस्ट कॉज कि आप most people don't actually accept it. Number 3 is guilt and shame. We have been unfortunately, हम एक ऐसी सोसाइटी में हमारे हम लोग रह रहे हैं जहां पर constantly women as well as men, दोनों genders को अगर आप देखें, there is a constant shaming and guilt. Like for men आप कह सकते हो कि for not being good enough in career or financial success, there's a lot of pressure on them. For women, there's like a constant pressure of so many other things. Then there's a self-blaming. Fear of society is again one thing जो हमारी society में बहुत ज़्यादा prevail करती है. हमारा हर action is based on कि society के लिहाज से आपको चलना पड़ेगा. उसका fear is too much on our minds. Then there's a chronic stress. उसके बाद fear of your child's future, या you can say कि survival mode, which is a constant state of fear of uncertainty, जो मैंने देखा है बहुत common in men, women, in couples, even in children, कि आपको you want to control everything, you want to know कि हमें पता होना चाहिए कि अगले 5 साल में हम क्या करने वाले हैं. Like planning and all this has become so strong, जिसकी वजह से anxiety ज़्यादा है, because we are unsure about our career, we are unsure about our relationships, जिसकी वजह से disturbance बहुत ज़्यादा है. Then fear of being judged, emotional trauma from the past जो मैंने पहले discuss किया है. Lack of support is also there. Like I said कि for women we don't have a government support, we don't have a societal support. Most of the women, we don't have a family support once they get married. So there's so many things, lack of support, lack of social circle, financial stress is again there, lack of resources are there. So there are multiple causes. It depends कि आप उसके अंदर किस में fit करते हो. Right. Yeah. So Then, yeah. So just another question, keeping all of these causes in mind कि इन वजह से हमारे पास mental और emotional health हमारी affect होती है. So why do you think it's so important to talk about mental health and the causes as well which lead to a mental health issue? It is very important to talk about it क्योंकि
like I said, मैंने उसे mention किया था कि we have a lack of support. So अगर suppose that's why मैंने अपनी initial slides में I shared my picture and I shared my story. क्योंकि अगर मैं अपनी story share नहीं करूंगी, there are many people who will not be feeling comfortable. बिकॉज अभी भी एक टैबू तो है कि आपको अगर आप कहो कि मुझे डिप्रेशन है या मैं एक थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ या मैं काउंसलिंग करा रही हूँ, पीपल सडनली दे पुट अ लेबल ऑन यू कि हाँ उसके अंदर ये इश्यूज हैं, या वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकती है, कि वो काम को कैसे मैनेज करेगी, रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करेगी. दो वी डोंट रियलाइज कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहां पर ये चीजें इस वक्त बहुत कॉमन है ड्यू टू जो भी रीजंस हैं, बट इट इज कॉमन नाउ. तो द मोर यू टॉक अबाउट इट, मे बी मेरे ये बात करने से शायद काफी लोगों के अंदर एक एक इंस्पिरेशन है कि ओके फाइन, शी कैन टॉक अबाउट इट, आई कैन टॉक अबाउट इट टू, इट इज वेरी कॉमन. सो लाइक आई एम नॉट अलोन इन दिस जर्नी. देयर आर मेनी पीपल जो बिल्कुल मेरी तरह ही फील कर रहे हैं. सो आई फील कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टॉकिंग अबाउट इट, because you are inspiring so many other people, and the more we talk about it, the more I think help these people can get. So that's why I think it's crucial. Certainly. And Yeah. you have a very interesting slide open right now, which is with the heading Understanding Your Emotions. If you could guide the audience and me about how we can understand emotions, maybe your दूसरों के भी. Yeah. So basically, इसका पहला step ही यही है, is understanding your emotions. Like I said, कि mental health is basically on surface. Emotions are something which is, it's big deep, जिसके अंदर आपका trauma है, आपका ancestral trauma है, आपके childhood issues हैं, आपके current, आपकी personality, बहुत कुछ है. तो उसके लिए पहला है कि observe के लिए you have to pause. Like I said, कि आपको you have to be responsive than reactive. अगर मैंने कुछ किया, if I have anger issues, या if I have any kind of aggression, I really need to think about it कि why I'm behaving like that, and then I need to reflect on it. Reflection के लिए journaling बहुत important है, and I can't put enough emphasis on that कि please जितना आप लोग journaling कर सकते हैं करो, क्योंकि it's extremely important. जब तक आप लिखोगे नहीं, you will not know. Just by processing it in your mind won't help. You have to write it down why I am behaving like that. And then third is acceptance is important, क्योंकि अभी मैंने जो नोट किया कि बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि they have an issue, because blaming game is so strong कि no I am like that because you are triggering me. I am like that क्योंकि मेरे काम में बहुत stress है. I am like that because this guy is making me unhappy. But they don't realize कि nobody can make you unhappy unless you are unhappy within yourself. तो issue मेरे अंदर है, and for that मुझे acceptance के लिए accept करना पड़ेगा कि yes, I have a problem. I am not reacting in a right way. Or and then you work on application, then you work on implementation. So these 4 steps are very important. जब तक मैं observe नहीं करूंगी, मैं reflect नहीं करूंगी, मैं उसको accept नहीं करूंगी. So these first 3 steps are important before we take help. इसलिए बहुत सारे लोग I feel कि help ले ही नहीं पाते क्योंकि वो पहले 3 steps ही नहीं कर पाते. अगर आप किसी को एकदम से जाके कहो कि no you go to therapist, that person will get offended कि मुझे क्यों कहे कि थेरेपिस्ट के पास जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज उसने पहले 3 स्टेप्स किए ही नहीं है. ही इज नॉट अवेयर कि उसके अंदर एक्चुअली इश्यूज क्या है. So now it's like what to do about it. Like I said, acknowledgement and acceptance, it's extremely important. Please acknowledge कि आपके अंदर issue है. Please acknowledge कि आपको help की ज़रूरत है. And there is nothing wrong in it. If we take help all the time, for everything, every aspect of our life, चाहे वो आपको अगर hair cut कराना है, आपको makeup कराना है, आपको मेडिकल हेल्प कराना है, सर्जरी चाहिए, कुछ भी, whatever you need help. Similarly, अगर आप ये कहीं पे फंसे में when it comes to your emotions and your mental instability, please go to a coach, please go to a therapist, go to your counselor and take help. Resist your own little tantrums like yelling. अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो by resisting doesn't mean कि you suppress it. By resisting means to say कि चीखने चलाने से बेहतर है कि you resist at that time and ask yourself कि what is this urge? क्या है जो मेरा चीखने को दिल कर रहा है? क्या है जो मेरा रोने को दिल कर रहा है? This is not right कि बिला वजह बैठे बैठे मुझे रोना आ रहा है. Fine, you can cry. There's nothing wrong in that, but you have to think about it कि मुझे रोना क्यों आ रहा है बगैर किसी बात के. What is it that's triggering me? Number 3 is be conscious. I feel कि आपके सारे
जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में वो सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएं इफ वी बिकम कॉन्शियस अबाउट इट, क्योंकि जब तक हम कॉन्शियस नहीं होंगे हम उसके बारे में कुछ करेंगे नहीं. तो इफ इन ऑर्डर टू टेक एक्शन वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट इट, ऑफ योर एंग्जाइटी एंड अराउंड देयर एंग्जाइटी. तो अगर आप किसी और इंसान के साथ हो जिसको एंग्जाइटी है या जिसको कोई कोई प्रॉब्लम है, जो चीख रहा है या वो आप पे गुस्सा हो रहा है या वो रो रहा है, एंड आई हैव नोटिस्ड कि ऐसे लोगों की प्रेजेंस में सडनली यू ऑल्सो फील कि आपकी एंग्जाइटी भी ट्रिगर कर जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट, इट्स अ नेगेटिव एनवायरनमेंट. वहां पर आप भी ट्रिगर हो जाते हो. एंड देन दिस इज अ टाइम टू बी कॉन्शियस कि ऐसा क्या है कि मैं भी ट्रिगर हो रही हूँ, मीन्स कि देयर इज समथिंग अनरिजॉल्व्ड इनसाइड माय बॉडी. सो अगेन कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. राइटिंग जर्नल, जो मैंने के पहले कहा था कि इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. योर बिहेवियरल डायरी, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो. Observe, reflect, take action. Meditation, which I always say in all of my सेशंस के प्लीज, मेडिटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड नाउ डेज इसका काफी रुझान बढ़ भी रहा है, और उसका एक रीजन यही है कि आपके माइंड को रेस्ट की जरूरत है. जैसे कि हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, उनको उसको खाना चाहिए, उसको नींद चाहिए. सिमिलरली आजकल अगर हम सोते हैं तो वो आई फील कि दैट्स नॉट मेडिटेशन, दैट्स नॉट रेस्ट. हम सोते जरूर हैं बट हमारा जो माइंड है वो रेस्टफुल मोड में नहीं जाता, क्योंकि देयर इज स्टिल सो मच गोइंग ऑन व्हाइल यू आर स्लीपिंग. सो मेडिटेशन इसलिए जरूरी है. और अभी आई लेट यू नो कि आगे हाउ टू मेडिटेट, क्योंकि मोस्ट पीपल जिनको एंग्जाइटी इश्यूज हैं या डिप्रेशन इश्यूज हैं वो मेडिटेट भी नहीं कर पाते, बिकॉज देयर इज सो मच गोइंग ऑन इन योर ब्रेन कि आप आंखें बंद कर ही नहीं सकते हो या यू कैन नॉट पॉज. जी. एक चीज आई वुड सजेस्ट प्लीज डू इन वन डे, जो you really love doing. It can be anything which is just connected to yourself. जो आपके आई डोंट नो, आपके बच्चे, आपके फ्रेंड्स, या सोशल लाइफ, या फोन, या फिल्म, anything which has nothing to do with outside but anything that you do, that is your creative self expression. It can be painting, it can be maybe I don't know, journaling, it can be filmmaking, uh, इट कैन बी एनीथिंग, मे बी डांसिंग. कुछ भी जो आपको करना अच्छा लगता है, जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जी. वो करना बहुत जरूरी है. ब्रेक द रूटीन. अगेन अगर आप एक ही रूटीन में हो, स्पेशली वो लोग जो कॉर्पोरेट कल्चर में काम करते हैं, आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस रूटीन को ब्रेक किया जाए, बट प्लीज नो कि उस रूटीन को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. डू समथिंग विच इज वेरी स्पॉन्टेनियस. कल्टिवेट न्यू हैबिट्स. Finding your community and your tribe is very important, which means कि like-minded people, and even if not like-minded people, वो लोग जो कि non-judgmental हो, जो कि आपका support हो, जो आपको which in which you, जिनकी company में you feel positive, like कि you are safe in this company, you are positive, you're feeling positive in this company. इस तरह का social circle होना जरूरी नहीं है कि वो आपकी फैमिली में हो. It can be your friends, it can be, अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स में ऐसे लोग नहीं है, then I would suggest कि find such people. And thankfully कि आजकल because of social media, Facebook, Instagram, you can easily connect with such people जो कि you feel positive in their company. It's very important to be surrounded with such people. Affirmations are very important. Reciting positive statements, positive affirmations, क्योंकि ये आपके ब्रेन को you know इस किस्म की, you can say कि your brain start believing that this is the truth of your life. If you keep on saying I'm mentally very healthy person, I'm the kind of person who think only positive. If you keep on reciting this kind of statement, this mantras, you will notice the change. क्योंकि आपका brain ये मानने लगेगा कि हाँ ये बात सच है, इस बंदे को तो गुस्सा आता नहीं. No, I don't get angry. जी. I'm a very positive person. You have to keep on saying that in order to believe that. Then exercise is extremely important too, and watch out the food you take. Say. Yeah. All right. So, you mentioned all these things that we can do, to cater to our mental health. So you also mentioned that mental health, how what it affects their life. You gave your own example about weight gain, sleep patterns, or asceticism. Can you give like a brief example of what you have seen in your practice for all these years? Okay, how you have seen mental health take a toll on people and their lives? A lot. क्योंकि you see, अगर आप mentally
या इमोशनली स्टेबल नहीं हो, जो मैंने अब नोटिस किया है कि आपकी डिस्पाइट हैविंग a great family, despite having a great career, financially, you're doing very well, still you feel a lack of something. आपको लगता है कि कुछ कमी है, आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो अपनी जिंदगी में, and this is because कि आप mentally unhealthy हो, आप emotionally stable नहीं हो. So अगर आप खुद empty हो, for example, like you say, glass is empty. So no matter how much I want to pour, I cannot pour. My family is automatically unhappy because I'm feeling unhappy. My workplace is automatically unhappy because I'm feeling unhappy. So जब तक मेरा glass full नहीं होगा, I cannot give happiness to anyone around me. That's why I feel it's so important to work on your mind, on your emotions, क्योंकि you need to keep your glass full. I know हमारे Exactly. culture में it's always we have been raised like that and we've been taught like that, is like others first. Others are important only if you are full. You cannot keep others more important than you. अगर आप ही empty feel कर रहे हो तो आप उनको सिवाय एंगर के, सिवाय टॉक्सिसिटी के, आप उनको क्या दे सकते हो? Because you have nothing to give, because you have never worked on yourself. तो जब अब you must have noticed कि जब आप कोई भी इस किस्म की चीज करते हो जिसमें you feel extremely happy, then you have a lot to give. You have a lot to give to your children, to your friends, to your family, to your workplace, because you feel full. There is so much in you to give others. इसलिए आई फील कि ये सारे एरियाज एटलीस्ट दिन में 2 या 3 घंटे give to yourself. It can be exercise, it can be your meditation, it can be your spirituality, your prayers, your जिससे भी आपको लगता है कि आपकी mental health improve हो सकती है, do give to yourself. Certainly. So another question that comes to my mind is, at times हमें acknowledgement or acceptance आ जाती है that we are going through a mental health issue. और फिर आपने इतनी सारी advices दी हुई हैं where we can journal, meditate, और लोगों को अक्सर वो एक will power नहीं होती to do all of these things. Like, how do we get there? How do we encourage people to get there when they acknowledge that, yes, I am going through depression or anxiety or stress? That's a very good question, because you're right कि it's easier said than done. I think everybody knows everything these days, कि सबको पता है कि हाँ, अगर अगर उनको realize हो भी गया, but जो एक pattern है जो कि सबके अंदर observe किया जाता है, people who are emotionally or mentally unstable, it is no motivation. Like, you get up in the morning and you really don't want to do anything. So it's like कि उसके लिए आप क्या करो? I feel कि just start with very small habits. Like I said, कि अगर तो वाकई में you have reached to that stage, then please go to therapist. Talk out, reach out to someone. If you think you can't afford a therapist and it's too difficult for you, reach out a friend, reach out someone who gonna listen. That's the first step. But please reach out. Like I said, okay, please do not sit just by yourself thinking कि नहीं, हर कोई busy होगा, because most people don't approach to people thinking कि किसके पास जाएं. चलो वो भी ठीक है. Like, I understand कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा ऐसा बंदा है ही नहीं जिसको वो reach out कर सके. That's very unfortunate, but okay, there might be possibility too. But I feel कि then there are small habits which I'm going to talk about it now. Start implementing in your life. Don't think कि अच्छा हम अगले दिन सुबह उठेंगे and we will do meditation, we will do journaling, we will do this, we will do that. No, you can't. It's totally understandable. But start with small habits. For example, like I said, food. Food is extremely important, which I personally feel that most of the people are neglecting. And how it is connected to mental health, I'm going to talk about it later, because your gut and your brain is interconnected through vagus nerve. आपके जो epigenomes है, which is your genes, which is your DNA, it changes it completely, and which is connected to your brain as well. उसके बाद आपका डायरेक्टली फूड जो है वो नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है. आपके जो प्लेजर केमिकल्स हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन जिसको आप कहते हो सेरोटोनिन और डोपामिन, जो ब्रेन से रिलीज होते हैं, बट एक्चुअली दे आर मेड इन गट. इट इज मेड इन इंटेस्टाइन, जहां पर आपका हेल्दी बैक्टीरिया होता है. तो खाना आप जो खा रहे हो, इट इज समहाउ कनेक्टेड टू योर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एज वेल. लाइक आई सेड, वेगस नर्व जो है, ये नर्व है जो आपकी गट को और ब्रेन को कनेक्ट करती है. सो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके ब्रेन के, इट इज वेदर इट्स डिप्रेशन, इट्स एंजाइटी,
और इट्स ADHD, ये सब आपकी ब्रेन में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, उससे उसकी वजह से ये शुरू होना शुरू होते हैं. तो एंटायर इन्फ्लेमेटरी फूड विच आई विल टेल यू लेटर कि वो कौन से हैं, दे विल रियली रियली हेल्प यू अगर आप अपनी थोड़ा सा फूड के ऊपर अपना ध्यान देना शुरू करो. बट अगेन लाइक आई सेड, आई अंडरस्टैंड कि जब आप डिप्रेशन में होते हो या एंग्जाइटी होती है, तो उस वक्त यू वांट, आपको वो वाले खाने चाहिए जो आपको इमीडिएट खुशी देते हैं. And they, unfortunately, they all are junk food. I understand they want, it's like a cheesecake, it's like a brownie or a burger, because वो आपको immediately serotonin release करेगा, like a drug. But उस time पे तो आपका serotonin release हो जाएगा, but the thing is, like any other drug, जब उसका effect कम होगा, जब उस junk food का everything, then it will give you more depression. So that we need to understand as well कि वो immediate solution तो है, but it's not a long term solution. So gut and brain are connected. So जो वो खाने जो inflammation आपकी brain में या gut में जो है वो देते हैं, that is dairy. That's the number one cause. And then we have a fried food, we have red meat, we have refined sugar, wheat. इसीलिए आई फील कि जो लोग अभी इस टाइम पे करंटली आई थिंक पाकिस्तान में कीटो का काफी ज्यादा है, बट आई नो पीपल आर डूइंग इट फॉर वेट लॉस. बट मोस्ट पीपल एक्चुअली सेड कि जो लोग कीटो करना शुरू हुए, दे सडनली फील बेटर, मे बी बिकॉज इट्स हाई फैट फूड, और जो ब्रेन है इट वर्क्स ऑन फैट. तो और उसमें आप ये व्हीट और डेयरी एंड फ्राइड फूड, ये चीजें आप बंद कर देते हो, रिफाइंड शुगर आप बंद कर देते हो, तो इमीडिएटली योर हेल्थ, यू नो, इट स्टार्ट्स गेटिंग बेटर, स्पेशली योर मेंटल हेल्थ. Then we have important supplements, बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि like I said, कितने micro nutrients होते हैं हमारी body is, it's like it's so beautiful, and there are so many things going on आपके brain is the most complex part of our body. There are so many things जो हमारी body में deficiencies होती हैं जिन चीजों की. For example, vitamin D is crucial for your brain health. B12, selenium, especially अगर आपको thyroid है उसके लिए. लेकिन अगेन लाइक आई सेड कि थायराइड अगर आपको इशू है उसका, जो आई थिंक मोस्टली वुमेन हैव, स्पेशली यंग वुमेन हैव इन दीस डेज, उसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है काफी लोगों को. विटामिन सी, ओमेगा 3, कोलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए. सो अगर आपको नहीं पता कि आपके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी में उनकी डेफिशिएंसी है, सो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि एटलीस्ट साल में एक बार प्लीज गेट योर ब्लड टेस्ट डन, एंड यू नो कि आपके इन सारे न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स क्या हैं. So most of the time हमारे इन सब की deficiencies होती हैं, and we don't know कि why we are feeling so sad, because ये आपके nutrients की deficiencies हैं. When you maybe just it works, अगर आप खाली इन्हीं supplements को ले लो, if you're in early stage of depression or anxiety, इसी से आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ जाएगा. So then we have yeah, thank you so much for telling us about all the foods that we should avoid and shouldn't take. So I recently came across a meme which said you are what you eat, and the person was like, I don't remember eating anxiety and depression. So now this all really makes sense, especially for the young population who keep posting such memes कि I don't remember eating anxiety or depression. So yeah, that makes a lot of sense. So yes, totally. Now we're going to learn how to meditate, hopefully. Yes, because like I said कि meditation बहुत बहुत जरूरी है, and I totally understand कि when जब यहाँ पर आप present mind में नहीं हो, when you are not conscious here, it's very difficult to meditate. But it's a very simple rule. Just start with 2 minutes, start with 1 minute. You don't have to do it 30 minutes meditation or 20 minutes meditation in one go. So it's easy way out. Whenever you have anxiety, I think the most understated thing is your breathing. क्योंकि just by breathing you can easily activate your parasympathetic nervous system, which puts you in a relaxing mode. What all these things do कि जब अक्सर लोग कहते हैं कि आप नमाज पढ़ो, या अक्सर कहते हैं आप meditate करो, all these things do one thing, they activate your parasympathetic nervous system. आप immediately आपको relaxing mode में डाल दिया जाता है. या जब आपको गुस्सा आता है, most of the people they say कि आप पानी पियो, because जब पानी पियोगे वो आपका relaxing system आपका activate कर देगा. So what does meditation do? Just start focusing on your breathing. Deep breathing is very important. So जब आप breathe पे focus करते हो, like you just close your eyes, or you don't close your eyes if you don't want to close your eyes. आप अपनी breathing पे just imagine कि how deeply you are breathing,
एंड इमेजिन और विजुअलाइज कि आपकी जो सांस है वो आप अंदर जा रही है डीप डीप इनसाइड एंड देन you are exhaling it, it goes in all parts of your brain. When your brain, you have put your brain into that, okay, you're actually visualizing your breath, how deeply it's going, and you're exhaling, just doing it 2-3 minutes, or then you extend it. When you think you can do it better, you extend to 5 minutes, 10 minutes. It's gonna help you a lot. It's gonna help you in calming in whatever situation you are. और ये मैंने अपना I'm speaking from my own personal experience. It really, really helped me big time in so many ways, not only in anxiety, but in fact in my depression also. And I had this allergic rhinitis issue. My nose has always been blocked. I was very surprised how it miraculously I have healed it just by breathing properly. The recommended application, if you can't do it by yourself, is Headspace. आप इसको फोन में अपना डाउनलोड करो हेडस्पेस में दे हैव रियली गुड गाइडेड मेडिटेशंस जो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप दे गाइड यू एंड दे हैव 2 minutes 5 minutes 10 minutes जस्ट पुट इट ऑन योर हेडफोन्स एंड इट गोना हेल्प यू अ लॉट मेक इट अ हैबिट अगर आप इसको कर सकते हो इट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग फॉर योर माइंड कुछ योगा आसनास है which helps a lot और ये आप easily घर में कर सकते हो these are 4 pictures because ये जो 4 asanas है they actually give a blood flow towards your brain. So basically हमारी body I feel it's more than just your organs and bones and muscles and blood. आपकी your spirit body है जिसमें आपके energy points हैं तो there are so many blockages sometimes that can happen, especially like I said कि अगर आपकी एक ही routine है, अगर आप कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हो, आपका कॉर्पोरेट लाइफ है या आप स्टूडेंट हो, सो पूरा पूरा दिन हम सिर्फ बैठे रहते हैं या फिर हम सो रहे हैं, सो देयर आर ब्लॉकेजेस एंड देयर इज नो एक्सरसाइज इन आवर लाइफ. So just by doing this for 2 minutes, I think it hardly take 7 to 10 minutes, not more than that. In fact, less than that. But again, like I said, कि एक routine बनाना और if you really want to fix yourself, if you really want to come out of this miserable situation, first step is कि your willingness. Without willingness आप कुछ नहीं कर सकते. Number one है willing. Number one है acknowledgement and acceptance, like I said. Then number two, once आपने acknowledge कर लिया, now your willingness to do something about it. जब willingness हो गई, then number three is just give yourself 10-15 minutes every day. Do your meditation, do something you love, yoga asanas. It will hardly take 10-15 minutes of your life. And then you will start seeing visible changes आपकी life में. Then there is EQ, which is emotional quotient. And again, like I said in the starting, जैसे कि emotional जी condition आपकी इतनी important है, ये आपका subconscious mind है. जो 80% या 90% हम अपने subconscious mind से जो कुछ मैं इस वक्त बोल रही हूँ, मैं अपना हाथ हिला रही हूँ, that's my subconscious mind. सिर्फ 10% माइंड है जो मैं अपने कॉन्शियसली अपने ब्रेन को यूज कर रही हूँ. सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. योर आईक्यू इज एक्चुअली दैट टिप ऑफ द आइसबर्ग एंड ज्यादातर जो चीजें चल रही हैं वो आपके ईक्यू में चल रही है. सो ये आपका सिर्फ इट डिपेंड्स ऑन योर अवेयरनेस, how well aware you are of your emotional quotient, how well aware you are of your emotions, of your sensitivities, आपकी life, आपका childhood, आपकी surrounding. These all things are extremely important in it. all right so I have another question about IQ and EQ related question. So like a lot of times we have heard that you cannot work on your EQ. Is that true? You cannot work on your EQ? No, you can totally work on your EQ. I think, but uske liye, like I said, the first step is you have to be aware, self-reflection. Self-reflection is extremely important. Without that, yes, you cannot work on yourself. अगर मेरा attitude क्या है उस problem की तरफ, if my attitude is keep on defending myself of my behavior, which I used to do actually, to be honest, कि oh yes, I am lazy because of this, or I have anger issues because of this, I speak like this because of this. I was in denial because I have my reason ready to justify myself. कि ओ मैं ऐसी हूँ because my parents did that to me. और मैं ऐसी हूँ because my husband is like that. मैं ऐसी हूँ because my boss is really, mean to me. So, there's never an ideal situation in our life. We will always find someone to put a blame on. कि मेरी जिंदगी में ये हुआ था, मैं इसलिए ऐसी हो गई, या the people have been really mean to me. दुनिया हमेशा से आई फील कि ऐसी ही थी. तो कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर जस्टिफाई होगा डिपेंडिंग ऑन लोग कैसे हैं. बट आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है कि
जो मेरा रिएक्शन है उनकी तरफ, इज इट जस्टिफाइड? पीपल हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट. दुनिया हमेशा से ही प्रॉब्लमैटिक थी, हमेशा से ही वहां पे उसमें मीन लोग थे. बट क्या उनके साथ टैकल करने का जो तरीका है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन माई इमोशंस एंड माई EQ. वो कितना एडवांस है. सो उसको एडवांस करने की जिम्मेदारी, इट डिपेंड्स ऑन अस, एंड इट ओनली कैन हैपन अगर मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन करूंगी. इफ आई बिहेव रियली बैड टू यू राइट नाउ, जी. और बाद में मैं उसको जस्टिफाई करती हूँ, देन ऑफ दैट मीन्स कि मैं चेंज होना नहीं चाहती. तो उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि मे बी I've been mean to you, but उसके बाद I sit down with myself and I realize कि why I behave like that at the first place. क्या मेरे पास कोई और तरीका था उस प्रॉब्लम को हैंडल करने का? क्या मे बी आई कुड हैव डन इट इन अ वेरी डिफरेंट वे? सो उसके लिए यू रियली नीड टू think, you need to sit down with yourself. Certainly. Yeah, like I said, keep a journal. It's important. Certainly. Then you have to set up a healthy routine. Like I said, spiritual health बहुत बहुत important है. Your physical health, emotional health, mental health and spiritual health. ये चारों चीजें मिलके आपकी overall health बनती है. I always say कि there is no way कि आप सिर्फ अपनी एक area पे काम कर रहे हो and then you ignore the rest of the three things. ये चारों चीजें आपस में interrelated हैं. Maybe you are very good in your exercising, you go to gym every day, आप बहुत healthy खाते हो, but then you don't do anything about your mental health, your emotional behavior, your spiritual health. You will still feel empty despite आप अपनी physical health पे कितना ध्यान दे रहे हो. Same goes for other part. I have seen people कि वो लोग बहुत नमाजी होते हैं, they रोजेदार, and they're perfect when it comes to their spiritual health. Still they have a mental issues, they have their physical health is going down क्योंकि उन्होंने अपने बाकी health के areas को ignore किया हुआ है. So ये चारों चीजें मिलेंगी तो आपकी overall health बनेगी. You have to work on your spiritual health, purpose of life. आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप जो आपका करियर है या जो भी है, what is the meaning behind it? That's your spiritual health. Then आपकी mental health की status क्या है, आपका emotional health की, physical health क्या है, वो चारों चीजें पे constantly आपको काम करना पड़ेगा to actually maintain your overall health. Certainly. Yeah. So this is the calendar which I think it can be very very helpful to many people. I made this like last year, and especially lockdown ke time pe it really helped in 2020. कि just make a calendar for yourself. It can be a personalized calendar, और उसमें it's like every day you pledge to do something. For example, Monday you decide to look for what is good even on the difficult days. Just step by step कि आज Monday, okay fine, no matter जितनी मर्जी negativity मेरे surrounding में हो, जितना मर्जी मैं toxic लोगों से मिलूं, मुझे कोई एक positive चीज ढूंढनी है. Just one thing, and just go by that and write it down. Then Tuesday ko maybe you can go reframe worry and try to find a positive way to respond, or write a letter to thank someone for what they did. So if you just do this, just pledge into one thing and do this one thing in 30 days, you will see कि आप कितने different आपका point of view, आपका perspective, आपकी approach towards life has been completely changed if you just make this calendar for yourself and do एक चीज आप रोजाना करते हो. certainly. These are certainly very good advices, and how mental health can be catered to, what we can do, like things we can do at home to cater to our own mental health, how we can accept and acknowledge and lean towards a good mental health. So these are like some really good pointers, and thank you so much for sharing these. This is just this is the last slide which I always ask my client. This is one of my favorite circle of life. क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जितनी भी हेल्थ है हम सबकी, वो इन चीजों के ऊपर बेस करती है. अगर आपके ये सारे एरियाज लाइफ में ठीक हैं, you are a healthy person, and I believe कि कोई भी इसमें full point पे नहीं पहुंचा, because we all lack something. So don't feel कि I'm the only one who have this problems and this and that. No,
I don't know anyone, even the most healthy person. Like I've been working in all these areas of my life. Even मेरा भी अभी तक proper circle complete नहीं हुआ. So जी. इसमें आप you can rate yourself, by yourself in the scale of 1 to 10. Just ask yourself, where do you stand in each area? Suppose 1 being the lowest and 10 being the highest in terms of satisfaction. तो अगर suppose in terms of creativity, आई फील कि मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल इज 2-3, तो आप जो सर्कल का मिडल है उसके टुवर्ड्स द सेंटर यू पुट अ डॉट ऑन दैट. और अगर आप बहुत फुली सेटिस्फाइड हो देन पुट अ डॉट इन द आउटर एज ऑफ योर सर्कल, एंड देन सी के जब उसको आप कनेक्ट करते हो डॉट्स को, तो वो आपका पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है. और इट इज लाइक लिटिल बिट ऑल क्योटिक सर्कल. सो हमारा गोल जो है वो होना चाहिए कि हमारा सर्कल कंप्लीट फुल राउंड सर्कल होना चाहिए. Alright. The moment you will have that, you are an amazing healthy person, mentally, emotionally, physically healthy person. So there's different areas. Joy is basically your inner happiness, how satisfied you are in that area of your life. Aapki social life kaisi hai, relationship, home environment, home cooking, physical activity, education, health, career, finances, spirituality, creativity. क्योंकि ये सब चीजें जब आपकी लाइफ में you feel fully satisfied in these areas, I feel कि आपकी mental and emotional health will automatically be stable. Certainly. Yeah. All right. Thank you so much, Zainab. I think that's the end of your presentation. And if anyone has any questions from Zainab, feel free to drop them down and we'll answer those for you. Zainab will be answering those for you. Okay, thank you so much, Zainab, for coming online and Thank you giving us so a much, Manur. I think it was a great topic to come up with. Thank you so much. Thank you for hosting this. no problem. Thank you. Thank you. Bye.